यूपीएससी एंड 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन आपके लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो द गर्ल हु कैन चैप्टर से लिया गया है। हु इज द राइटर? एमा एटा एडू ने लिखा है और इसका जो मेन कैरेक्टर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जो सेंट्रल आइडिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 2 साल से इम्प्रडिक्टेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी के नरेटर के बारे में आपको बताना है कि कौन नरेटर है। तो यहाँ पर नरेटर का ध्यान रखने से पहले हम लोग चैप्टर देख लेते हैं, द गर्ल हु कैन, रिटन बाय अमा एटा एडू। तो यहाँ पर नाना मेन कैरेक्टर नहीं है, एजोआ है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं या बहुत सारे टीचर भी अक्सर कहते पाए गए कि एडजोआ है। जिस तरह से एडजेक्टिव है ना, यहाँ पर डी साइलेंट है, एजोआ ही है। और साउथ अफ्रीका में अक्सर डी साइलेंट होता है ए के बाद, इसलिए एजोआ ही आप सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अब मैं प्रोनाउंसिएशन पर चला गया, ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। Second question, what physical characteristic of Ajwa become the main subject of concern when you study the whole story? You would like to know the main concern of the story or main point of understanding. Ajwa become the main subject, and it was not her height but it was her skinny legs, उसके पतले पतले पैर। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओ। दैट इज ऑल, यही आपके लिए सबसे अच्छा होने वाला है। व्हाट इज नानाज रिलेशन टू एजोआ? नाना का क्या रिलेशन है एजोआ के साथ? मदर? No. Grandmother? Yes, she was the grandmother, but not welcoming grandmother, very rough and tough grandmother. Oh my God, don't we think such a grandmother we have? So option B is the correct one. Go with option B. Question number 4, what does Nana complain about the most regarding एजोआ? एजोआ के बारे में सबसे ज़्यादा नाना को क्या चिंता खाई जा रही थी? वो बेचारी क्यों परेशान थी? नाना वो कम खाती है, नाना को कोई परेशानी नहीं। वो स्टडी ज़्यादा नहीं करती, नाना को कोई परेशानी नहीं। नाना वॉज वरीड दैट हर लेग आर टू थिन फॉर वुमनहुड। अब व्हाट इज वुमनहुड? व्हेन अ गर्ल बिकम वुमेन she bore out children, and at that time leg play important role. So too thin her legs would be, as thought by Nana, not by myself. Nana was the grandmother of Ajwa. So here option will be C. Question number 5, what theme is central to the girl who can? The girl who can के साथ जो theme central है, what is the theme? Here theme is the conflict. What is the conflict? Conflict means dwand, antardwand between tradition. Nana represents tradition, whereas mother, as was mother, related to modernity. That is the conflict, a tussle. So here you will go with the option B, and in this way you will try to solve the question answer with logic. वेयर इज द स्टोरी सेट? ये स्टोरी कहाँ का है भैया, आप बता दो। तो नाइजीरिया, नॉन, ऑल आर अफ्रीकन कंट्रीज बट इट इज ऑफ घाना। गो विथ बी, and that is all. How old is Ajwa at the beginning of the story when the story is being proceeded? At that time Ajwa was 7-year-old. Ajwa is 7-year-old. It is as per our readings. That is why option B is quite clear, my dear student. Pay attention. Who is Ajwa's mother in the story? Ajwa mother is Mami. C, option C is the one you will go with. Mami is Ajwa's mother. Now question number 9. Why does Nana think Ajwa's legs are problem? Ajwa's legs are a problem. Ajwa leg, Nana represented the tradition. Nana symbolized the old school of thought what Ghana's people would have.
So she said they cannot carry the weight of the children when Ajwa would bear children out. At that time, her leg would not be able to support Ajua, as Nana thought. It was Nana's problem. Nana's old school of thinking. नाना ऐसा ही सोचती थी. That's why. तो द रेस्ट टू ऑप्शंस को हम लोग छोड़ देंगे. क्वेश्चन नंबर 10. Which subject in school does Ajua particularly enjoy? Ajua particularly enjoy the strange subject. And what is the strange subject? Running and physical education. Oh my god, here you can say OMG. Option is B. And Ajua, oh, whose leg were skinny, Nana discouraged her, but she thought, no, no, running is my meals and boons. That's why. Question number 11. What opportunity does Nana get at school that changes people's perception of her leg? People perception means Nana like creatures, Nana like people living in Ajwa society. So, what opportunity does? So here, she was not monitored, she was not chosen class monitor. She was selected for a running competition. That was the correct option, and it changed the thought that a girl who can, the girl who can. So here, question number 12. What is Nana's initial reaction to Ajua? Nana's initial reaction to Ajua being selected for running. So Nana's initial reaction to Ajwa being selected for running, it was clearly that she is doubtful. Nana was doubtful and dismissive about Ajwa's परफॉर्मेंस. ओह माय गॉड, पहले तो वो सेलेक्ट नहीं हो रही थी, पहले वो दौड़ नहीं सकती थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, अब वो कह रही है कि भैया शी इज डिसमिसिव. नाना जैसे क्रिएचर के बारे में क्या ही कहा जा सकता है. दैट इज विलन, रियल विलन. सो क्वेश्चन नंबर 13. हाउ डज मामी डिफर फ्रॉम नाना? Nana's own daughter was Mami, and Mami was the mother of Ajoa. But Mami differ from Nana in her attitude towards Ajoa. और दो पर्सनालिटी है, दो महिलाएं हैं, दो अलग अलग तरह के. तो एक ट्रेडिशन एंड Mami represents the modernity. She is equally critical. No, she is indifferent. No, indifferent मतलब कोई नहीं. She is more supportive and quiet. Yes, she is more supportive and quiet. She is not very repulsive. So here option C you will go. So what option? What happens when Ajoba participate in the running competition? In the running competition, when Ajoba participates, what happens? She wins and gains the recognition. Very good. Ajoa wins and mm, gains the recognition. That is the climax of the story. It is the most highest part. Option C is the correct one. Question number 15. What lesson does the story highlight about a physical appearance? A story that highlight about the physical appearance, that here it is said that here that it can be misleading and should not limit to potential. दैट इज़ द करेक्ट वन. यहाँ पर है कि ये काफ़ी मिसलीडिंग होगा जब आप फिजिकल अपीयरेंस को लेकर सोचेंगे, और वहाँ पर जो आपके पोटेंशियल को लिमिट करने की बात करता है, दैट इज़ रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट लिटरेरी टेक्निक डज एमा एटा आइडू? एमा एटा आइडू मेनली यूज इन द स्टोरी. एमा एटा आइडू ने कह लीजिए कि टाइमलेस स्टोरी लिखा है, द गर्ल हु कैन. इसमें कौन से उसने टेक्निक को यूज़ किया है? तो इट वाज अ काइंड ऑफ आयरनी. कितनी बड़ी विडंबना है कि नानी है, उसकी जो दादी है, आयरनी है, वो नहीं चाहती है, मदर चाहती है. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17. What role does tradition play in Nana's view of womanhood?
नाना जो व्यू है वीमेनहुड के बारे में, वो क्या रोल प्ले करता है, व्हाट रोल डज ट्रेडिशन प्ले नानाज व्यू ऑफ वीमेनहुड। नाना का व्यू वही है ट्रेडिशनल वन, दैट अ वुमन मस्ट बी स्ट्रांग टू फार्म एंड बियर चिल्ड्रेन, टू वर्क इन द फार्म एग्रीकल्चर लैंड एंड बियर चिल्ड्रेन आउट, बच्चे पैदा करे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एजोवा's success in running symbolizes, Ejoa's success in running symbolizes that the empowerment of girl despite limitations. Girl in the world face limitations, several kinds of limitations, challenges. Despite limitation, you have to break and you have to create something new, something special, and something. Question number 19. Which character shows generational conflict in the story? Generational conflict in the story, that is the main character that is shown, and it is question number 19. You will go with that Nana and Mami. Nana is the mother of Mami and Mami is the mother of Ajoa. It means Nana was grandmother of एजोवा। यहाँ पर नाम से मतलब नहीं रखिएगा, नाना एंड मामी, हिंदी में इसके मतलब बदल जाते हैं, बस यहाँ पर द गर्ल हु कैन में दूसरे मतलब है। व्हाट इमोशन डज एजोवा फील व्हेन शी हियर नाना एंड मामी आर्ग्यूइंग अबाउट हर लेग? There was great argument between Nana and Mami. Not great, but a kind of argument that was stiff. Not it would be found in traditional Ghana's family, where mother would argue with the grandmother. Here, so here it is considered it was completely shame and confusion. It did not accepted by Azoa. Azoa was very cool girl or a kind of aggressive in the sense of her understanding. So यहाँ पर आप यही कह सकते हो। व्हाट इज द नरेटर स्टाइल ऑफ द स्टोरी? नरेटर का क्या स्टाइल है स्टोरी में? नरेटर इज द फर्स्ट पर्सन फॉर एजोवाज परसेप्शंस। ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे, और इसी तरह से आप ऑप्शन भी ध्यान रखते रहने हैं। कई बार मैं स्टोरी के साथ बह जाता हूँ। तो यहाँ पर है व्हाट डज द लिटिल what is the title? The girl who can suggest. The girl who can challenges expectation and succeed, means all kinds of expectation would be challenges and it will be succeeded B. So question number 23. What transformation happens in Nana attitude by the end? Nana's attitude by the end, the transformation that happens, and it happens that she proudly accept Azoa's ability. Accept the Azoa's ability, that is called option B. That is correct. Question number 24. The story emphasizes the importance of tradition over modernity. That is not the correct one. It is that sports is an outlet for talent. Sports is an outlet for talents. A, that is the correct one. And the main message of the story is, what is the main message of the story? Every child has a hidden potential regardless of his appearance and physical ability. That is C is the correct option, and दैट इज़ ऑल, यही सही है। तो सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब